Nothing but this is Pascal's law. Very interesting topic. After completing this topic, you will really find this law practically useful in our day-to-day life, and we will study the application part of this as well. First, let's understand this law. The law is quite lengthy. I have written it on the board. The pressure applied to any point of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished. Undiminished here means that there is no losses in that pressure, okay, and it is transmitted equally undiminished to every point of the fluid. Each and every place it will go, as well as to the walls of the container, with only one condition, that gravity is to be neglected. Okay, so in short I'll again explain this. When you apply pressure, कभी भी pressure apply करते हो कोई भी जगह पर, okay, in a container, वो pressure हर एक point पे equally transmit होगा, सब जगह equally जाएगा, कहीं भी कुछ भी loss नहीं होगा. Okay, like if for example अगर हम energy apply करते हैं, whatever energy we apply at the start, same energy we don't get at the end. Okay, there are some losses in the surrounding, but in case of pressure this will not happen. Okay, the losses won't be there and it will be transferred to each and every part. Okay, let's understand this with the help of some examples. Okay, first example I'll take this. This is a container. Okay, in this container you can observe that this is a pressure gauge. Okay, this all are pressure gauges through which we can find the value of pressure. I am going to apply pressure at this point. I am going to increase my pressure over here. So let us understand that मैंने इधर pressure apply किया है. Okay, so because of that excess pressure, समझ लो यहाँ पर reading आया है to some value, let's say 10. Okay, 10 जितना value आया. Now when you observe the value of pressure in this all gauges, your observation will be here also it will be showing 10, here also 10, same. So what does this conclude? Whatever pressure I have applied at this part is all transmitted to all sides without any losses. Whatever value I am getting over here, the same value I will get at each point. Did you understand this first example? Now let's go to the second one. Simple day-to-day example, which is of balloon. Okay, balloon में एक जगह से आप air को push करोगे, so balloon will inflate equally from all sides. That is our practical observation. ऐसा तो नहीं होगा कि कोई एक साइड से फूलेगा दूसरे साइड से नहीं फूलेगा. Obviously हर जगह से equally spread होगा. It will inflate from all sides. Okay, so this is also an example where Pascal's law is seen. Okay, एक जगह से pressure apply करो हर जगह पहुंचेगा. Okay, let's take one very interesting example from your textbook. This diagram is there in your textbook. Okay, so what is seen in this? We have this piston. Okay, we have this piston over here, over here, over here, over here. So from this what you understand? Here the area of that piston is equal to small letter A. Here the area is half. Here the area is double. And here the area is triple. Let's say I am applying some force at point A. So यहाँ मैंने force apply किया. This is my force, capital F. Okay. So ये point पे pressure कितना है? Let's see. Pressure at point A will be equal to F divided by small letter A. Now मुझे क्या करना है? मुझे हर जगह same pressure चाहिए. Okay, so in order to get same pressure, area is different. So what I have to do? I have to change the value of forces. As I change the value of forces,
pressure at all points will remain same, and piston's position will also remain same. Let's try to find out. Pressure at B. इधर मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? It should be equal to double. Okay, so I will write 2F by 2A. 2 got cancelled, so I got F by A. Okay, let's understand PC. PC is equal to, here I need to apply force which will be equal to 3F. Okay, so 3F divided by 3A. This here also I'll get F by A. Similarly, pressure D, I'm not writing it, but you can very well understand this. अगर आप half pressure apply करोगे, that is F by 2. So 2 and 2 will get cancelled. Again, the pressure at D, you will get it as equal to F by A. Understood? So pressure at all points is same. So piston का position हर जगह रहेगा same. Is it understood? Okay. So I got one topic to be completed, which is Pascal's law, and you can very well take a screenshot of this. After this, we will move on to the numerical, which was left out. Numerical number 11. Okay, please read that. Okay, so numerical number 11, I'm reading it. It is about hydraulic lift. Okay, so in case of hydraulic lift, first let me explain you the topic of hydraulic lift, because before going to numerical, you should have an idea about what is hydraulic lift. Okay, so this is a part of applications. We are going to study 3 applications. First is hydraulic lift. Second is going to be hydraulic brake system. And third, which is almost related to hydraulic lift, which is called as screw jack. Okay, so I'll give you example of screw jack. ट्रक है समझ लो, ट्रक एंड उसके नीचे काम करना है. ओके, एंड ट्रक को थोड़ा लिफ्ट करना है, मे बी ड्यू टू सम रीजन. तो ऑब्वियसली एक जैक होता है जिसमें जो पर्सन मैकेनिक जो रहेगा, जो लिफ्ट पे काम करने वाला है, सॉरी ट्रक पे काम करने वाला रहेगा, ही मस्ट बी मूविंग समथिंग लाइक दिस. ऐसे ऐसे घुमाता है. ओके, जैसे ही घुमाता है ट्रक लिफ्ट होता है. ओके, सो एक पर्सन, जस्ट सिंगल पर्सन इज रोटेटिंग दैट, घुमाता रहता है एंड पूरा ट्रक लिफ्ट हो जाता है. बट एक्चुअली अगर वो ट्रक को लिफ्ट करना है, सो 4 लोग से भी वो ट्रक लिफ्ट नहीं होने वाला. बट that screw jack helps to lift the truck by just single person. So what is happening over that, you'll get to know in this topic, hydraulic lift. Then consider brake system. Okay, समझ लो कोई कार है जो 100 की स्पीड पे जा रहा है. ओके, एंड उसको ब्रेक लगाना है. सो व्हाट डज अ ड्राइवर डू? सिंपल, अपने पैर से ब्रेक पेडल हिट कर रहा है एंड कार स्टार्ट्स टू कम टू रेस्ट. करेक्ट. बट वही कार को 10 लोग मिलके 100 की स्पीड पे रोक सकते हैं क्या? नेवर, नॉट पॉसिबल. बट व्हाट इज देयर इन ब्रेक सिस्टम कि एक ही आदमी विदाउट अप्लाइंग फुल फोर्स, सिर्फ अपने फुट का फोर्स अप्लाई करता है एंड 100 किलोमीटर पर आवर का कार भी रुक जाता है. ओके, सो दैट आल्सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इन दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट hydraulic lift. Okay, let us consider here we have one system, as a system है. This is filled with fluid, liquid. Okay, इधर liquid है and यहाँ पर force apply करना है एक person को. One person only will apply force over here.
the area, cross section area is different here, cross section area is different over here. समझ लो इधर एक कार रखा है, maybe 1000 किलोग्राम और 1500 किलोग्राम का कार रखा है, and सिर्फ एक पर्सन यहाँ पर फोर्स अप्लाई करके वो कार को लिफ्ट करेगा. Okay, so how it is going to happen, let's understand. Area over here is A2, area over here is A1, here force applied is F1, and here whatever force we get is F2. Is it clear? Now let us assume some values. Okay, either person ने force apply किया 150 न्यूटन, एक पर्सन ने फोर्स अप्लाई किया 150 न्यूटन. Here the value of cross sectional area, let us consider 10, okay, meter square. So what is the pressure over here on this side? Let's try to find out. P1 is equal to F1 upon A1, which will give me 150 divided by 10, which will give me 15 Pascal. Okay, I hope you understand now. ये Pascal किधर से आया? Okay, Pascal's law. So now 15 Pascal pressure is applied over here. By Pascal's law, we understand the same pressure is going to be transmitted without any losses, undiminished. So यहाँ पर भी pressure कितना आएगा? P2, which will be equal to 15 Pascal. Correct or not? Now let us assume इधर का area 10 times है. Okay, इधर का area 100 meter square है. Okay, so now let's apply formula. P2 is equal to F2 upon A2. Okay, therefore P2 का value है 15, F2 divided by A2 का value है 100. Okay, so 100. So therefore finally F2, what I get is, therefore F2 value I get is 1500 Newton. समझ में आया? Okay, so what is the observation? 150 का फोर्स एक पर्सन ने इधर अप्लाई किया है, बट उसका इफेक्ट यहाँ पर 10 टाइम्स हुआ. ओके, ये कार को लिफ्ट करने में 10 लोग इजीली उठा सकते हैं. ओके, बट हियर द फोर्स इज मेड 10 टाइम्स, सो कार इज गेटिंग लिफ्टेड बाय एप्लीकेशन ऑफ ओनली 150 न्यूटन, which is getting converted 10 times 1500 newtons. I hope you got this application of hydraulic lift. Okay, similarly hydraulic brake system भी है, टेक्स्ट बुक में एकदम अच्छा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. ब्रेक पैडल इज शोन, उसका कनेक्शन चारों जगह at all 4 wheels of the car is shown. It is practically not possible for me to draw right now because थोड़ा time waste होगा, but you can very well refer it in your textbook. Orally I will explain about hydraulic brake system. Okay, so hydraulic brake system same logic. जहां पर पेडल होगा, okay, उधर का area will be very less. Okay, and then when you apply a very small force onto that brake pedal, the pressure which is generated at that area, brake pedal के area पे, वो pressure चारों जगह at all the 4 wheels is transmitted equally and undiminished. Okay, without any losses. So now that all 4 wheels are getting equal pressure, but वहां पर wheels के इधर area same नहीं रहेगा. It might be 10 times. Okay, I'm not giving you the exact value. It changes from design to design. It might be 10 times of the area present at the brake pedal. So ultimately समझ जाओ, जितना force brake pedal पे apply किया है, उसका 10 times force generate होगा चारों wheels पे. Okay, and that is how it helps to stop the car. So this is how Pascal's law is used in day-to-day life. Okay, one more thing, एक last application है which is I talked about screw jack. Okay, screw jack में भी वैसे ही रहता है, fluid रहता है screw jack के instrument में. Okay, एक person ऐसा घुमाता है, force apply करता है, जहां फोर्स अप्लाई कर रहा है उधर का एरिया would be very less. Okay, then that force is getting converted. Okay, 10 times 15 times depends on the design कि दूसरे साइड पे आपने एरिया कितना रखा है. Okay, and that is how
the whole truck is getting lifted by the application of force by only single person. So to summarize, these are the applications: hydraulic lift, hydraulic brake, and screw jack. Okay. Now we can definitely move for the numerical number 11. Okay. Please, if you want to note anything, I am giving you 15 seconds. You can note this. Okay, so I am moving for the numerical number 11 from your unsolved exercise of textbook. I am reading it. In hydraulic lift, input piston has surface area 30 centimeter square. So this area will be written as A1. A1 is equal to 30 centimeter square. Output piston, मतलब जहां पर कार को लिफ्ट करना था, over there the area is equal to 1500 centimeter square. If force of 25 Newton is applied to input piston की इधर जो force है, that is force of person, which is equal to 25 Newton. They have asked you to find the weight on output piston. मतलब आउटपुट पिस्टन पे कितना फोर्स जनरेट होगा, वेट. सो दैट इज दे आर आस्किंग यू F2. ओके, वेरी सिंपल. पास्कल्स लॉ अप्लाई करो. फॉर्मूला आई विल बी राइटिंग व्हिच विल बी P1 equal to P2. Pressure is going to remain constant, so I will write over here F1 upon A1, F2 upon A2. values put करो. F1 25, A1 30 is equal to F2 upon A2 1500. Okay. Now actually centimeter square को meter square में convert करना चाहिए, but since both are in centimeter square, cancel हो जाएगा. In this sum no need to do. So you can very well observe this will get cancelled. 1 5. So therefore F2 will be equal to 25 into 50. 25 5 120. Okay, so this is your final answer. Okay, go through this. I am going for the next numerical, which is a solved example. This sum was number 11. Okay, 11 from your textbook. Okay, fine. Now our next sum is a solved example from your textbook. Solved रहेगा. So this will be termed as a homework for you. I'll just give you the formula how it is solved. Calculation part आपको करना है, and answers you can very well verify from your textbook because it is a solved example. Solved example number 2.3. Okay, 2.3. I'm reading it. Hydraulic brake system, ये brake system का example है, of car of mass 1000 kg has a speed of 50 km per hour. So two values I can see. First value is mass is equal to 1000 kg. उसका initial speed already वो speed में है, which is equal to 50 km per hour. This is not the SI unit of speed. Okay, so I'll convert this into meter per second. The shortcut, you know, it is into 5 divided by 18. Okay, so you will get this answer in meter per second. Next part. Has a cylindrical piston of radius 0.5 centimeter.
So ये जो रेडियस दिया है वो ब्रेक पेडल की इधर का रेडियस है. This is the radius near the brake pedal. So I'll write this as R is equal to 0.5 centimeter, which is R1. Next is the slave cylinder has a radius of 2.5 centimeter. R2 is equal to 2.5 centimeter. This radius is near the wheels. Okay, slave cylinder बोलते हैं उसको. Clear? Constant force of 100 Newton is applied on the car. Sorry, on the brake of the car. Okay, so brake पे जो force apply करेंगे that will be your F1, which is equal to 100 Newton. Okay, they have asked you how much distance the car will cover before coming to stop. ब्रेक अप्लाई करोगे तो थोड़ा तो कवर होने वाला है डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा. So here we have been asked to find the distance, that is our S. Kinematical equations में जो formulas है उसमें S जो है वो पूछा है. Okay, so distance which is our S. Now what are the formulas that we are going to use? First, Pascal's law का formula apply करना पड़ेगा, which will be F1 upon A1 is equal to F2 upon A2. Okay, इसमें से हमको force मिलेगा. Then using that force we will apply this formula. Force is equal to mass into acceleration. कार का acceleration find करो. Acceleration नहीं बोलना चाहिए, actually car stop होने वाला है. So instead of acceleration we should say deceleration. Okay, so deceleration find करेंगे. And finally we will be using this formula, v square is equal to u square minus 2as. Understood this? इधर आ गया अपना distance. So this is a lengthy sum. 3 formulas are going to be used. So let's write the solution part. I'm not going to solve this, सिर्फ formula wise बता रहा हूँ. So F1 upon area, it's a cylinder, circular होगा. So I'll write this as pi r1 square is equal to F2 pi r2 square. Okay, so pi gets cancelled. Now you can observe F1 का वैल्यू yes given इधर है, R1 का वैल्यू yes we have, R2 का वैल्यू yes we have. Okay, so इसको सॉल्व करोगे so definitely F2 का आंसर मिलेगा आपको. Clear? Now you will apply second formula, F2 is equal to mass into acceleration. Check over here, F2 का आंसर मिला होगा, mass का वैल्यू 1000 kg. So इसको सॉल्व करोगे so therefore acceleration का आंसर मिलेगा. Second part done. Now apply this formula, v square is equal to u square minus 2as. Now why minus sign? Because acceleration negative है, I said deceleration है, इसलिए negative लेना पड़ेगा. u का value you have found out over here, this is the value of u. Okay, v का value रहेगा 0 because car is going to stop. Correct? So final velocity will be equal to 0. Let me write over here, v will be equal to 0. So here you have this v, u, acceleration इधर मिल चुका है. So therefore इसमें s का value आपको last answer मिलेगा. Okay, so this part I am giving you as a homework. Calculation part you have to do it. Please, you can take a screenshot of this. I am giving you 15 seconds. Okay, fine. So we are moving on to our next topic, which is how to measure atmospheric pressure. What are the instruments that helps us
to measure atmospheric pressure. So atmospheric measure करने का जो instrument है, they are called as pressure gauges. Okay, and pressure gauge helps us to measure not only pressure of atmosphere, it helps us to measure the gauge pressure also. Okay, and pressure meters also they are called sometimes pressure meters. Atmospheric pressure measure करने का जो topic है, it's quite interesting. This was found out by a scientist. You have already heard of its name. It's an scientist name is Torricelli. Okay, this is an Italian scientist, and Italy आजकल world में कुछ ज़्यादा ही famous है. Okay, so this person is also from Italy. Okay, and he devised an instrument which is called as Mercury Barometer. This is the instrument which helps us to measure atmospheric pressure. But mercury students के लिए use करना advisable नहीं है. उसके vapors easily contact में आ सकते हैं and it could be hazardous. But still we have to understand this how it was done. You might be thinking mercury के बदले water use करते हैं. No issue. But you will understand gradually water use करने में भी एक problem. Okay. So first let's understand how this mercury barometer works. It consists of mercury barometer consists of a small vessel which is filled with a liquid. That liquid will obviously be mercury. Then you are supposed to take a tube. एक बड़ा सा tube लेना है. The length of the tube will be 1 meter, not more than that. उससे ज़्यादा का requirement नहीं है. All this thing you will understand. The diameter of that tube should be equal to 1 centimeter. Okay, so let me write diameter 1 centimeter, length 1 meter. Okay, अब करना क्या है वो ट्यूब में? That tube should be closed from one end. दोनों साइड से ओपन नहीं होना चाहिए. कैपिलरी ट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ. Okay, like a test tube. So this is our, let's say, that vessel which is filled with mercury, and you are supposed to take that tube. वो ट्यूब को ना उल्टा करना है. Okay, पूरा फील करना है मर्क्यूरी से वो ट्यूब को. 1 मीटर का जो ट्यूब रहेगा पूरा मर्क्यूरी से फील करो एंड देन उसको इसके अंदर उल्टा करो. So you can imagine आप खुद अगर इसको उल्टा करने जाओगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत मर्क्यूरी तो इधर गिर जाएगा. करेक्ट और नॉट? सो जैसे इसको उल्टा करोगे वो ट्यूब को लाइक दिस, योर ऑब्जर्वेशन विल बी इधर डेफिनेटली मर्क्यूरी रहेगा, इधर डेफिनेटली मर्क्यूरी रहेगा. बट check this part here, the mercury will not be seen because थोड़ा बहुत mercury गिर जाएगा. Okay, so this area, I repeat, this area is called as Torricelli vacuum. This is a perfect vacuum. मैंने आपको सिखाया perfect vacuum क्या होता है and normal vacuum क्या होता है. This is a perfect vacuum. इधर जरा भी air नहीं है. Okay, because of mercury spillage the space is left empty over here and that is vacuum, Torricelli vacuum. Okay, now let's understand इससे atmospheric pressure हमको कैसे पता चलेगा. I already told you one property of pressure कि एक particular horizontal level पे pressure remains constant. Okay, अगर इधर pressure find करना है, इधर find करना है, इधर find करना है, कहीं भी find करो, हर जगह value एक ही आएगा because ये same horizontal level है. So let's say this point is our C, this point is also equal to C, and this point I will name as D. अब point C पे pressure क्या है? This is open to the atmosphere, correct? So point C पे pressure is equal to atmospheric, correct? This is C. अब point B, can I say pressure at point B is equal to pressure at point C? Yes, because same level पे ना. So this will be equal to pressure at C. But pressure at C क्या है? Atmospheric. So C के बदले लिख दो atmospheric, correct? Pressure at B कैसे फाइंड करने का? B के ऊपर देखो इतना लिक्विड प्रेजेंट है. Okay, so इतने लिक्विड का जो वेट होगा
that will be acting at point B. इतना ही consider करना है, correct? So pressure at B find करना है तो simple basic formula apply करो, which is density, height and G. Okay, so height will be equal to this. This is the value of that height. Now let me tell you, अभी मैं जो values लिखने जा रहा हूँ 12th standard के टेक्स्ट बुक में मिसिंग है, but 11th standard के टेक्स्ट बुक में ये आपको मिलेगा. Okay, so therefore P atmospheric is equal to density of mercury होता है 13,600. ये जो हाइट आएगा एक्चुअली प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे एक्सपेरिमेंट, दिस विल कम एज 0.76 मीटर. ओके, मतलब 76 सेंटीमीटर. सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि 1 मीटर की क्यों जरूरत है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है कि ये हाइट 1 मीटर से ज्यादा चला जाए. ओके, 1 मीटर का ट्यूब काफी है. एंड देन वैल्यू ऑफ G इज 9.8. ओके, एक बार 11 के टेक्स्ट बुक में लैपलेस करेक्शन देख लेना, टॉपिक ऑफ लैपलेस करेक्शन, उसमें यही वैल्यूज मिलेगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो दिस इज हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कैलकुलेटेड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज मर्क्यूरी बैरोमीटर. ओके, नाउ वन मोर थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. चलो, मर्क्यूरी के बदले अगर वाटर लिया होता तो क्या प्रॉब्लम आता? मर्क्यूरी के बदले अगर वाटर लिया होता इधर तो क्या इश्यू आता? फर्स्ट प्रॉब्लम इज वाटर का डेंसिटी इज वेरी लेस. ओके, इट इज जस्ट 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, इसको इमेजिन करो, यहां से ना एटमॉस्फेयर है ना प्रेशर अप्लाई कर रहा है. ओके, यहां से भी एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई कर रहा है और इधर से भी एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई कर रहा है. सो अगर आप कोई प्रेशर ऐसा अप्लाई करोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप समझ जाओ कि यहां से लिक्विड ऊपर ही आने वाला है. इज इट अंडरस्टूड और नॉट? ओके, सो अगर यहाँ पर वाटर है जिसका डेंसिटी एकदम कम है, तो अगर एटमॉस्फेयर इधर प्रेशर अप्लाई करेगा तो यहाँ से वाटर डेफिनेटली शूट अप करेगा, करेक्ट और नॉट? अब ये ट्यूब 1 मीटर का लिया तो वाटर का डेंसिटी कम होने की वजह से ये शूट अप करेगा कितना हाइट तक? इट गोज टिल 10.33 meters. Okay, let me write the height in case of water comes around 10.33 meters. Can you imagine? मतलब यहाँ पर आपको एक वेसल लेना पड़ेगा और वो जो ट्यूब होगा वो अप्रोक्सीमेटली 11 मीटर जितना लेना पड़ेगा. ओके, 11 मीटर मतलब समझ जाओ कितना हाइट होता है. ओके, सो सच अ लॉन्ग ट्यूब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. Hence, this atmospheric pressure फाइंड करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम लोग मर्क्यूरी के साथ ही करते हैं. वाटर के साथ करने जाओगे तो डेंसिटी कम होने की वजह से बहुत हाइट आएगा, which is not possible for us to measure. Okay, so this is how we conclude one topic of mercury barometer. Okay, fine. Now our next topic is open tube manometer. ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड. अगर अभी तक टॉपिक समझ रहे हैं अच्छे से तो ये सब टॉपिक आपको जरा भी टफ नहीं लगेगा. ओके, यूट्यूब मैनोमीटर है ये. यूट्यूब एज यू अंडरस्टैंड यू शेप एक ट्यूब रहेगा. ओके, उसका कनेक्शन एक कंटेनर के साथ किया होगा जिसमें एक गैस फील्ड होगा एंड वो गैस का हमको प्रेशर फाइंड करने का. आई विल ड्रॉ द डायग्राम इन क्विक टाइम. ओके, लेट अस कंसीडर दिस इज दैट यूट्यूब. ऐसा यूट्यूब है. Okay, so this is our U-tube which is connected to a container. इसमें गैस फील्ड होगा. Let us consider this point as D. ये गैस का हमको प्रेशर फाइंड करने का है. This side is open.
इसलिए इसको ओपन ट्यूब मैनोमीटर बोलते हैं। ये एटमॉस्फेयर को ओपन रहेगा। इसमें लिक्विड हम लोग वाटर यूज कर सकते हैं, नो इश्यू। ओके, वी कैन यूज केरोसिन आल्सो, जिसका डेंसिटी कम है इसमें यूज कर सकते हैं। So let us consider I have filled this with water. So this is that water. Fine. Now try to understand what is going to happen. इधर अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मतलब यहाँ से कंटिन्यूस प्रेशर है, कोई प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो जैसे इस पे प्रेशर आएगा आप समझ जाओ ये लिक्विड का लेवल ऊपर जाएगा, करेक्ट और नॉट? सो यहाँ पर प्रेशर होने की वजह से समझ लो ये लिक्विड का लेवल थोड़ा नीचे आया, दिस हैज केम डाउन एंड ये लेवल थोड़ा इंक्रीज हो गया। ओके, सो हाइट में डिफरेंस आएगा, व्हाटएवर हाइट यू सी ओवर हियर you will observe a more height onto this side. Clear? Now let's understand some topics like points over here. ये point को हमने C नाम दिया, same level पे इधर ये point को हमने B नाम दिया, and ये जो top level है this point I have named as A. Simple concept. If I ask you pressure at B is equal to pressure at C, yes or no? Obviously same level. So yes, pressure at B is equal to pressure at C. If I ask you pressure at C equal to pressure at D, yes. Why? Because gas का pressure तो C पे आ रहा है, so C is equal to D. So from this I can write B is equal to D. Okay, therefore pressure at B is equal to pressure at D. इतना समझा? Now we need to find pressure at B. इधर का प्रेशर फाइंड करना है, सो प्रेशर एट बी फाइंड करना है, तो समझ जाओ ये स्विमर के जैसा है, स्विमिंग बिलो द वाटर। सो यहाँ पर समझ लो स्विमर है, उसके ऊपर प्रेशर फाइंड करना है, तो इतना लिक्विड तो आएगा, इसका हाइट है h, इसके ऊपर क्या है एटमॉस्फेयर, इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, सो इसके ऊपर एटमॉस्फेयर भी आएगा। सो अगर प्रेशर एट बी फाइंड करने का है, इफ आई वांट टू फाइंड प्रेशर एट बी, it will be equal to atmospheric pressure plus this much, which is rho hg. समझ में आया? So ये फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, so therefore pressure at D will be equal to this, which will be equal to P atmospheric plus rho hg. So our aim in this manometer was to find pressure at D, और हमको फॉर्मूला मिल गया। ओके, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दो, सो देयरफॉर PD minus P atmospheric is equal to rho hg. अब इससे क्या क्लिक होता है? This is nothing but absolute pressure minus atmospheric pressure. If you remember, इसको हम gauge pressure बोलते हैं। Okay, so by this formula you get the gauge pressure, and by this formula you get what? The absolute pressure. So this is how we complete the topic of open tube manometer as well. Okay, I'm giving you some time, please copy this. Don't worry about the diagram. Diagram is there in the textbook. Points are also almost the same, A, B, C, D. Just this part I have simplified for you for your understanding. So इसका अगर screenshot ले लिया तो अच्छा है, नहीं लिया तो please be quick. Okay, so this way we complete one major topic about this atmospheric pressure. Our next topic is a complete different one, which is called as surface tension. Okay, I think chemistry में surface tension word usually आता है,
स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में विस्कोसिटी आप पढ़ लेते हो शॉर्ट में, एक आध पैराग्राफ रहता है. देन सरफेस टेंशन का भी एक टॉपिक होता है, एक आध पैराग्राफ होता है. ओके, बट इन दिस फिजिक्स वी हैव टू स्टडी सरफेस टेंशन इन डिटेल. Please don't take tension. नाम में टेंशन है तो quite easy topic. You will understand it very well. Just some basics is required and you will enjoy it. So physics का टेंशन पता होना चाहिए क्या है. Okay? And you will say हमसे better कौन जानता है टेंशन. Correct or not? So first topic we need to understand is intermolecular forces. Okay? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में क्या क्या आएगा? यू हैव हर्ड दिस. कोहेसिव फोर्स. सेकंड adhesive force. सुना होगा. कोहेसिव फोर्स इज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन particles of same substance. Correct कि नहीं? So cohesive force, if I consider, we will have mercury एक ऐसा लिक्विड है जो वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है. I'll tell you a simple example. मर्क्यूरी अगर है किसी के पास, नहीं है तो लैबोरेटरी में हो सकता है, उसमें से थोड़ा सा पार्टिकल फ्लोर पे गिरा दो, देन वो मर्क्यूरी को कलेक्ट कर लो, एंड वंस यू कलेक्ट इट आपको फील भी नहीं होगा कि यहाँ पर फ्लोर पे मर्क्यूरी गिरा हुआ था. वही आप वाटर के साथ ट्राई करो, थोड़ा पानी फ्लोर पे गिरा दो, साफ कर दो कपड़े से, एंड व्हेन यू ऑब्जर्व यू विल ऑब्जर्व दैट हाँ थोड़ा वेटनेस है. व्हाई? बिकॉज वाटर सॉलिड दैट इज फ्लोर, टाइल्स, व्हाटएवर, उसके साथ बॉन्डिंग बनाता है. सो हमको जो टाइल्स है, फ्लोर है, थोड़ा वेट फील होता है, बट मर्क्यूरी डजंट मेक बॉन्ड. मर्क्यूरी सिर्फ दूसरे मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स के साथ ही बॉन्ड बनाएगा. तो कोहेसिव फोर्स में मर्क्यूरी का एग्जांपल आता है. सेकंड, सिर्फ मर्क्यूरी नहीं है, लेट मी टेल यू, वाटर आल्सो मेक्स बॉन्ड. जैसे रेन गिरता है, वाटर ड्रॉप्स, बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स मिक्स हो जाते हैं, ओके, एंड इट फॉर्म्स अ बिगर रेन ड्रॉप. सो वाटर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो दैट विल आल्सो कम अंडर कोहेसिव फोर्स. ओके, आई रिपीट, forces of attraction between particles, molecules of same substance. अब adhesive समझ जाओ क्या आएगा. adhesive force of attraction between molecules of different substance. जैसे मैंने फ्लोर का एग्जांपल दिया, वाटर और फ्लोर में अट्रैक्शन होता है, दैट इज adhesive force. वाटर को अगर आप स्टील के ग्लास में डालो, ओके, पानी पी जाओ, देन एक बार स्टील के जो पेरीफेरी है उस पे अपना फिंगर घुमाओ, यू विल ऑब्जर्व कि हाँ वेटनेस है, बिकॉज वाटर स्टील के साथ भी बॉन्ड बनाता है. सो दिस ऑल थिंग्स विल कम अंडर adhesive forces. इज इट क्लियर? सो ये जो फोर्सेस है ये क्या पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही एप्लीकेबल है या फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एप्लीकेबल है? Obviously these forces are applicable to only particular distance. Let's say मेरे पास एक सरफेस है, इधर एक वाटर ड्रॉप है, इधर एक वाटर ड्रॉप है और इधर एक वाटर ड्रॉप है. ओके, सो चांसेस क्या है? ये दोनों वाटर ड्रॉप का मर्ज होना पॉसिबल है? यस, बिकॉज दे आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर. अगर मैं पूछूं ये वाला और ये वाला क्या कंबाइन हो सकता है? यू विल से नो, बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा है. सो डेफिनेटली ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है उसका भी एक रेंज होता है. यू अंडरस्टैंड, वाईफाई का एक रेंज होता है ना, वैसे इसका भी एक रेंज होता है, पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही एप्लीकेबल है. सो दैट इज व्हाट इज द टॉपिक कॉल्ड एज रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ओके, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर forces. समझ में आया? It is the maximum distance up to which intermolecular forces are applicable. I repeat, it is the maximum distance up to which intermolecular forces are applicable. Then इसके बाद next, these are all definitions. Let me tell you, छोटे-छोटे definitions हैं which can come for 1 mark. Next definition is sphere of influence. ओके, सो लेट्स से इधर एक मॉलिक्यूल है ये वाला, एंड इसका एक डिस्टेंस होगा, रेंज होगा, which will be spreaded in all the directions, all 4 directions.
करेक्ट और नॉट? तो मतलब यहाँ से इधर तक, बस इधर तक ही वो रेंज है, इधर से इधर तक एक रेंज है, देन इधर से इधर तक रेंज है एंड इधर तक रेंज। सो मैंने रेंज चारों साइड ड्रॉ कर लिया। अब ये चारों को ज्वाइन करूं अगर मैं, ओके, लाइक दिस, अंडरस्टूड? प्लीज पार्डन मी, ये स्फीयर नहीं बना है, बट समझ जाओ आप, when I join all this four distances, okay, I will get a sphere. So that is what is called as sphere of influence. मतलब क्या, ये sphere के अंदर अगर कोई ड्रॉप है, जैसे इसके अंदर कोई ड्रॉप है, तो डेफिनेटली चांसेस है मर्ज होने का। अगर कोई ड्रॉप स्फीयर के बाहर है, लाइक दिस, देन व्हाट यू कैन कंक्लूड, नहीं ये काफी दूर है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उधर तक एप्लीकेबल नहीं है, and this will not merge. Did you understand this? Cohesive, adhesive, range, sphere of influence. Then we have one more definition which is called as surface film. Surface film. For understanding surface film, I will have to draw a vessel which is filled with liquid. Okay? One thing I forgot to tell you, ये जो रेंज है, इसका भी एक वैल्यू है which is coming in nanometers. Okay, so इसका एक रेंज है 10 raised to -9 meter. 10 raised to -9 meter. I hope you know it is equal to 1 nanometer. Okay, so once you understand this, let's go to surface film. In this beaker, this is your surface of the liquid. Correct? ये आपका सरफेस है। अब इधर से आप नीचे जाओ, कितना डिस्टेंस तक जाओगे? इक्वल टू दिस 10 रेज टू -9 मीटर। नीचे जाओ, मतलब रेंज ही पकड़ो, ये सरफेस का एक रेंज पकड़ो, तो नीचे आओगे तो समझ लो ये रहा उसका रेंज। इधर तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एप्लीकेबल है। सो दिस होल पार्ट इज कॉल्ड एज surface film. Is it clear? So these are some definitions which are related to surface tension. Let me tell you, our topic has changed. Our new topic is surface tension. In my homework today, you will have to write all these definitions, one mark definition. Okay, so please go through this. I am giving you 10 seconds. I have just explained you it. No definitions I have written. एक बार mark कर। Okay, so अभी ये सब समझा है, so definitely we can go for surface tension. Once we understand surface tension, today's lecture is done. Okay, so I'll draw a beaker filled with liquid. Again, I think ये diagram तो ऐसा है कि एक चार्ट ही बना लेना चाहिए मुझे इसका। Number of times I have drawn this diagram. Okay, consider surface film. Okay, this is your surface film. इधर तक है. I am considering 3 molecules. One molecule is over here, A, well inside the liquid. Second molecule in the surface film, B, in the surface film. And third molecule exactly on the surface. Samjha difference? A inside the liquid, B in the surface film, and 3, C on the surface. Now consider this A molecule. क्या होगा इसके साथ? कोहेसिव फोर्सेस। आजू बाजू में सब जगह वाटर है, सो वाटर के साथ अट्रैक्शन होगा, यहाँ से अट्रैक्शन होगा, इधर से अट्रैक्शन होगा, इधर हर जगह से अट्रैक्शन होगा। एंड दिस इज व्हाट इज, इसको क्या बोलेंगे? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना अट्रैक्शन ए मॉलिक्यूल के लिए लेफ्ट साइड से होगा उतना ही अट्रैक्शन राइट साइड से, जितना अप साइड से उतना ही डाउन साइड से। सो ऑल साइड इट इज बैलेंस, करेक्ट और नॉट? सो इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है,
ओके, नेट अनबैलेंस फोर्स नहीं। लेट्स कम टू दिस पार्ट। अब B का मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना रहा हूं। लेट अस कंसीडर द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ B इज लाइक दिस। अब ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को ऑब्जर्व करो। इसका मेजर पार्ट लिक्विड में है, ये सब लिक्विड का पार्ट है। ओके, आई रिपीट, मेजर पार्ट लिक्विड में एंड थोड़ा सा स्फीयर का पार्ट किधर है, एयर में, एटमॉस्फेयर में। सो मेजर लिक्विड में है तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बी को खींचेंगे एंड एयर मॉलिक्यूल्स आर वेरी लेस। सो अल्टीमेटली बी पे क्या होगा, अनबैलेंस्ड इनवर्ड फोर्स, बी को कोई अंदर खींचेगा। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फॉर सी। सी के केस में देखो मैं बनाता हूं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लाइक दिस। अब सी मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सरफेस पे है, उसका आधा स्फीयर एटमॉस्फेयर में है, एयर में है एंड आधा स्फीयर वाटर में। नाउ यू विल से जितना एयर में है उतना वाटर में है तो बैलेंस हो जाएगा, बट नो, इधर भी गड़बड़ है। व्हाट विल हैपन, यू हैव स्टडीड दैट molecules of liquid are very close to each other. Sorry, molecules of liquid are very close to each other. Okay, ज्यादा molecules आपको water में मिलेंगे, whereas air molecules, you know, gas है, spreaded रहेगा. So what we can conclude, molecules in liquid are more, molecules in air are less. So C पे भी क्या होने वाला है, C पे भी net water का attraction रहेगा, water के molecules उसको ज्यादा खींचेंगे. So conclusion क्या हुआ, लिक्विड के अंदर छोड़ के बाकी जो भी मॉलिक्यूल्स है सरफेस फिल्म में हो या तो सरफेस पे हो, अल्टीमेटली उन पे एक नेट फोर्स रहेगा व्हिच विल बी पुलिंग इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको नीचे खींचता रहेगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टेंशन। ओके, नॉर्मली टेंशन फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं, स्प्रिंग में टेंशन होता है, रोप में टेंशन होता है। So what is this tension? Why it is different than force? दोनों का यूनिट सेम है, you know that. फोर्स का भी यूनिट न्यूटन है, टेंशन का भी यूनिट न्यूटन है, तो डिफरेंस क्या है? फोर्स हम प्रैक्टिकली हाथ लगाते हैं, समझ लो मुझे दरवाजे को पुश करना है तो मैं हाथ लगा के उसको पुश करूंगा या तो पुल करूंगा। बट टेंशन में क्या है, अगर समझ लो मुझे चेयर को खींचना है, मैं हाथ से भी खींचूंगा तो वो फोर्स बोला जाएगा। मैं क्या करूंगा, चेयर को एक रस्सी बांधूंगा एंड रस्सी खींचूंगा। सो व्हाट इज द थिंग, टेंशन में ना यूजुअली पुलिंग ही होता है, वो भी रोप की मदद से या स्ट्रिंग की मदद से। सो अल्टीमेटली इतना समझो, टेंशन आया मतलब खींचने का। अंडरस्टूड? आई रिपीट, टेंशन आया मतलब खींचने का, पुल करने का। सो नाउ लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट। मैं ये सारे मॉलिक्यूल्स रब करता हूं, अपना कंसंट्रेशन सरफेस पे रखो, सरफेस पे। इधर मॉलिक्यूल सी, वी हैव अंडरस्टूड कि उसको सी को भी वाटर मॉलिक्यूल नीचे खींच रहे। लेट अस कंसीडर डी, इसका भी वही होने वाला है, नीचे ही खींचेंगे। कंसीडर ई, कंसीडर एफ, ये चारों मॉलिक्यूल सरफेस पे है। बिकॉज ऑफ मोर मॉलिक्यूल्स इन वाटर, ये चारों को कोई नीचे खींचता रहेगा। सो आप समझो, खींचना मतलब क्या, टेंशन। एंड कौन टेंशन में, जो भी सरफेस पे है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक नेम व्हिच इज सरफेस टेंशन। Understood? So because of this surface tension, you can imagine कि water का जो surface होता है कभी भी है ना exactly flat नहीं दिखता। Okay? आपको वो हमेशा है ना एक अलग ही shape का दिखेगा। I hope you can see it. Okay? इधर थोड़ा अलग है and इधर अलग है, ends पे अलग है। Why it happens? You can understand. ये सब concept अभी मैं reveal कर रहा हूँ। First of all तो इधर खींचा जा रहा है उन लोगों को, इसलिए नीचे आ रहे हैं। What about this part? What is happening over here? इधर adhesive force है, water है, water ये समझ लो स्टील का बीकर है, तो उसके साथ बॉन्डिंग बनेगा, तो उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। सो व्हेनेवर यू ऑब्जर्व एनी मेनिस्कस, इसको मेनिस्कस बोलते हैं, वाटर का मेनिस्कस देखोगे ना, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कॉनकेव शेप का होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग। क्लियर विद सरफेस टेंशन? सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आई कैन वेरी वेल टेल यू। Practical application about surface tension I can very well tell you. एक एग्जांपल देता हूँ, like spiders, छोटे छोटे spiders होते हैं, वो वाटर के ऊपर वॉक कर सकते हैं, making dimples. Okay? So उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सरफेस टेंशन है। I'll give you one example. समझ लो इधर वही वापस मॉलिक्यूल ड्रॉ किया E,
here I have F, here I have C. So what is going to happen? इन सबका एक forces रहेगा like this. Okay, I hope you understand. ये सब एक दूसरे के साथ forces से connected रहेंगे. So इसको ऐसे ही समझो कि there are people which are holding each other's hand. एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखे. So अगर हाथ पकड़ के रखे तो कोई भी वो हाथ के ऊपर walk करके जा सकता है. So वैसे ही कुछ है. यहाँ पर जो forces है water molecules के बीच में, उसके ऊपर से ये spiders walk करते हैं. Is it clear? So this is one of the example of surface tension in our day-to-day life. Secondly, one more example I'll give you. Needle. Needle जो आपके पास रहेगा, उसको एकदम height से फेंको ये बीकर के अंदर. You will observe कि needle है ना सीधा अंदर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा. But वही needle को gently इसके ऊपर place करो, gently, very roughly. Okay? What you will observe? इस बार needle नीचे नहीं जाएगा. इस बार नीडल है ना इधर इधर ही पड़ा रहेगा. ओके, फिर उसके ऊपर अगर आप थोड़ा फोर्स अप्लाई करोगे, यू विल ऑब्जर्व योर नीडल नीचे चला जाएगा. सो व्हाई इट इज हैपनिंग? वेरी सिंपल. इधर देखो बॉन्डिंग हुआ है. ओके, सो ज्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तो बॉन्डिंग टूटेगा नहीं. नीडल भी उसके ऊपर फ्लोट कर सकता है. ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एंड नीडल विल गो डाउन. इज इट अंडरस्टूड? इट्स लाइक चाय पीते हो ना, तो अगर फैन के नीचे रखा है चाय तो उसके ऊपर कैसे मलाई जम जाता है, फिर वो मलाई के ऊपर आप रखो कुछ भी, वो डेफिनेटली फ्लोट करेगा. सॉरी. ओके, सो ये एक टाइप का मलाई जैसा समझो ना, एक लेयर बन जाता है ड्यू टू सरफेस टेंशन. ओके, सो हियर आई फिनिश माय टॉपिक ऑफ सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन बहुत डिटेल में सीखना बाकी है. दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन.